Hey everyone, welcome to my channel. Phonic Star Rashi welcomes you all lovely people. This video is all about the spelling rules chur. Let's begin. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Rashi Gulati. Today I'm going to tell you the difference between chur and this chur and this chur. So what is the difference between this chur TURE, CHER और THER? ये हमें कब यूज़ करना है, किन वर्ड्स के साथ हमें ये चर यूज़ करना है और किन वर्ड्स के साथ हमें ये चर यूज़ करना है. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस पे पूरी एक्सप्लेनेशन होगी एक छोटी सी टिप के साथ. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, टिप देखिएगा कि मैं एक टिप दूंगी आप लोगों को कि कब आपको ये चर यूज़ करना है एंड कब आपको ये चर यूज़ करना है. Please do like and subscribe to my channel and follow us, and please do share this video as much as you can. So अब मैं बात करती हूँ TURE इस चर के बारे में. ये चर जो 4 अल्फ़ाबेट्स का है ये पहले तो इकट्ठे ही पढ़ा जाता है, एक साथ हम इसे पढ़ेंगे. इसकी साउंड होती है चर. आपको बताऊंगी कि कब CHER यूज होता है और क्या टिप है इसे जानने की कि कब ये चर यूज होगा और कब ये चर यूज होगा. सो लेट्स बिगिन. दिस वर्ड इज nature. Why? This is a, but long vowel a sound with chur. So whenever chur is there and before chur there is a vowel, a short vowel, so long vowel sound will come, or you can say the name of the vowel will come, such as nature, nature, nature. A will become a because this is the a name of this vowel. So nature, chur, we will read it together in words like mixture, 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 chur. These 4 alphabets we will read it together. And please, 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 in 90% of the cases where I said the vowel sound gets converted into the vowel name when chur comes, 90% is followed, and it is followed by few exceptions. Few exceptions are there. So we were talking about mixture here. Mixture, chur sound will be separated from this mix. The next one is future. U is a long vowel. U short vowel में इसकी U की साउंड होती है अ, बट लॉन्ग vowel में U की साउंड क्या होगी? U. तो क्या बना ये वर्ड? future, chur. Yes. Now comes another word, that is feature. जब हमें जानना हो कि चर ये आएगा कि ये, तो ब्लैंक छोड़ दीजिए और इसको इन 3-4 जो अल्फाबेट्स हैं 4, इनको साथ में पढ़िएगा. सो फीचर. सिमिलरली वर्ड लाइक क्रीचर. इसको क्रिएचर नहीं बोलते, हम इसको क्रीचर बोलते हैं. क्री एंड चर. Similarly, word like fracture. A will come because C is a consonant coming with chur sound. So, fracture.
More ch words are as followed. This is picture. C here is silent. C here does not have a sound. We don't say picture. We say it picture. C हमेशा silent होगा picture में. It is not picture. It is picture. Next word is moisture. Chur will come here. Oi is a long vowel and with the followed by a consonant. Next word is lecture. Lecture. And the next one is temperature. A will come as a long vowel sound. Or you can say the name will come. So in temperature, temperature, temperature. Now comes the word signature. A is the name of the alphabet. Signature, signature. Literature, literature. And another word that says miniature, miniature. There are more such words. Let's begin with them. And we're going to explore more ch words with a short tip of the ch sound. So please do watch it till the end. And here begins the adventure of ch world. So the word adventure comes with the ch, T-U-R-E. The word like furniture, furniture is with T-U-R-E. Words such as structure, agriculture, text, we will not read it as text, we read it as texture, texture. Words such as expenditure, T-U-R-E, chur will come. Denture, T-U-R-E, chur will come. Now in words such as nurture, nurture, T-U-R-E, chur will come. Words such as vulture, legislature, chur will come. A is the long vowel sound that is coming, that is the name of the vowel, and G, the sound of G is J. Whereas in gesture, the sound of G is J. This is gesture, not gesture. Why G? Because G is, whenever G is followed by I, E and Y, G को जब भी आगे G के कोई भी वोवल आता है I, E और Y, तो G की साउंड हार्ड G में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हार्ड G भी बोला जाता है, और ज बन जाती है. ज साउंड में G gets converted when G is followed by I, E and Y. ये मैं आपको एक नई वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी what is hard G, what is soft C. But अभी के लिए this gesture, j sound is coming because it is followed by E. And in legislature, j sound is coming because it is followed by I. In words such as fixture, torture, and words such as dip are chur. So in all these words and a lot more, chur sound is coming with T-U-R-E. Let's begin with when to write C-H-E-R and T-C-H-E-R. And now we say when to use chur. Chur words कौन से हैं जिसमें C-H-E-R आता है या T-C-H-E-R आता है. Words such as richer, snatcher, launcher, voucher, catcher,
bencher, teacher, pitcher, researcher. एक्चुअली टीचर्स और पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को किस तरह पढ़ाएं कि ये चर साउंड कब आता है. तो एक टिप, दैट इज नॉट अ रूल, दैट इज अ टिप. आई मेंशन इट that is not a rule anywhere written, that is a tip when to use and how to use ture या फिर cher. So let's begin with the tip. So the tip is we need to break the word till the sound ch. Till the sound ch, we need to break the word, and then we need to see if the word makes some meaningful or makes sense. कोई मीन बनाते हैं या कोई सेंस बनाते हैं वर्ड. जब हम च तक उसको रीड करते हैं तो हमारा आता है CHER या TCHER. और जब हम च की साउंड तक वर्ड को पढ़ते हैं और वो कोई भी सेंस नहीं बनाता तो हमारा आता है TURE. TURE, आई रिपीट, दिस इज जस्ट अ टिप, दैट TURE तब आता है, ये चर जो है ये तब आता है जब कोई सेंस नहीं बनाता वर्ड, जब तक हम उसे च तक पढ़ें. और CHER, TCHER तब आता है जब वर्ड को हम रीड करें च साउंड तक, च की साउंड तक हम रीड करें और वो वर्ड बिना अर के भी साउंड सेंस बनाता हो. सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड, लाइक 2-3 एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू गिव यू, सो दैट आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा कि कब ये चर यूज करना है और कब ये चर यूज करना है. वर्ड सच एज furniture, furniture. Which chur will come? TURE, CHERE or TCHER? Furniture. If I read this word till furnish, तो क्या कोई सेंस बन रही है? क्या कोई वर्ड जो च तक बोला मैंने वो मीनिंग है उसका कुछ? furnish, no meaning, hence TURE will come. So in words such as richer, if I say richer, अब मैंने वर्ड पढ़ा rich. rich की सेंस है, there is a meaningful word that is rich, so this chur will come. Or we can say words such as mixer or mixture, we say, sorry, mixture, mixed. If we see the word till ch sound, is it making sense? No. So this chur will definitely come. So this is just a tip that you're going to follow while doing these sounds, alphabets, making words, these chur sound. I hope you like my video. I hope this is helpful and meaningful. I hope this tip helps you in future. Thank you everyone. Please do subscribe and follow my channel, and I'm bringing on with more such videos. Thank you. Please do show love and support. Thank you.